Hello viewers. In today's section, we are going to discuss about the memory. So, welcome back to my channel. आज का हमारा topic है memory. So, let's get started. So, first of all, what is memory? Memory is an essential component of a computer. What is it? It is an essential component of a computer. Essential component that stores. क्या करता है? It stores data, instruction, and the result of a process so that the CPU can access them when it's needed. So मेमोरी कंप्यूटर का वो पार्ट है जहाँ पे हम डाटा इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को स्टोर रखते हैं जिससे सीपीयू जरूरत पड़ने पे उसे यूज कर सके। मेमोरी में हम इनपुट डेटा स्टोर कर सकते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए, प्रोसेसिंग के बीच के रिजल्ट स्टोर करने के लिए, एंड वेयर we are also used to store the final output store. So तो memory is a so we can say the memory is a computer का वो स्पेस है जहाँ हम डाटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरी या परमानेंट स्टोर रखते हैं। So, memory helps the computer run program and data process data by storing the information required for the operation. अगर कंप्यूटर को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका सभी इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर रहता है। Now moving to the next slide. Now here we discuss what are the load of a memory. So memory performs several important roles in a computer system. First one, storage of a data. Memory stores data in the instruction needed by the computer for performing the operations and for processing of the data. Secondly, it support multitasking. It support multitasking. मेमोरी मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है यानी कि एक मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। जो मेमोरी होता है जितने भी हम टास्क को रन करते हैं वो मेमोरी पे ही रन करते हैं। तो मेमोरी ही हमारी मदद कर रहा है, कंप्यूटर को अलाउ कर रहा है ताकि वो मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ एक ही टाइम पे रन कर सके। इट्स अलाउड टू रन मोर देन 2 टास्क एट द सेम टाइम। सेकेंडली, थर्ड में रनिंग द एप्लीकेशन। Memories hold the currently running applications and their data so that CPU can process them quickly. So जितने भी हमारे एप्लीकेशंस हैं ये सभी मेमोरी पे ही रन करते हैं। तो मेमोरी और ये सब रन कर पा रहे हैं, सभी रन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है memory hierarchy. So memory hierarchy is a arrangement of different types of memories. On what basis? It's stored. It's on the basis of speed, cost, and the storage capacity to improve the system performance. In memory hierarchy, the faster memory is placed closer to the CPU, while the slower memory is placed further away. So let's understand memory hierarchy by its diagram. Here is the diagram of a memory hierarchy. As you can see, they are further classified into 4 levels. Layer 1, CPU registers. Second, cache memories, SRAMs. Third, level 2 is main memory, DRAMs. Level 3, magnetic disk. Level 4, speaker disk and magnetic. हम इन सबको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट में इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी। So internal memory is comprising of main memories, cache memories, and CPU register. So these are internal memories are directory. These are accessible by accessed by
processors. Whom and whom access them? Processor. And there is external memory. These are the comprising of a magnetic disk, optical disk, and a magnetic disk, etc. Peripheral or storage device, which are accessible by the processor by a input-output module. So both are accessible by processor, but their where internal memory are directory. इन्हें डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है प्रोसेसर, लेकिन एक्सटर्नल मेमोरीज को वो बाह्य इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इनके द्वारा वो इन्हें एक्सेस करता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स. सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द क्या डिफरेंस होता है इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरीज में. अब हम जानते हैं कि ये डायग्राम किस बेसिस पे बना है. सो हम एक करके इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे ना. सबसे पहले हम पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सपी. सो जो अपर लेवल्स में क्या थे? सीपीयू, मेन मेमोरी, ये सब जो होते हैं ये इनकी स्पीड बहुत ही हाई होती है, दे आर फास्टर. जितने जो हमारे अपर लेवल्स के थे वो क्या थे? फास्टर थे. अपर लेवल आर फास्टर बाय लोअर लेवल आर स्लोअर. तो जितने जो अपर लेवल जाएंगे लेवल 1 2, ये है अपर लेवल. तो जो भी डायग्राम ऊपर हिस्से में तो अपर लेवल जाएंगे सीपीयू, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, ये सब फास्टर है. और लोअर लेवल जो मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, these are slower. Since upper level are faster, so lower they require lower access time. इनको एक्सेस करने में हमें टाइम कम लगेगा. वेयर लोअर लेवल की स्पीड कम है, सो इन्हें हमें एक्सेस करने में हायर टाइम लगेगा. एंड द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कॉस्ट. सो जितने भी टॉप लेवल पे थे वो सब का है मोर एक्सपेंसिव है. और जो जितनी मेमोरी जो थी लोअर लेवल पे वो सब का है चीपर है, यानी कि लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू टॉप लेवल. So SRAM, so main memories, CPU, they are highly costly, whereas magnetic disks, magnetic disks are cheaper. And the next last character is storage capacity. So अपर लेवल जो CPU, मेन मेमोरी ये सब इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है. और जितने भी लोअर लेवल हैं इन सबके स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है. जैसे हम इस डायग्राम में बात करें तो जो CPU रजिस्टर है इनकी लेंथ होती है 16 से 64 बिट्स. और अगर हम नीचे बात करें मैग्नेटिक ऑप्टिकल तो इसमें 13 बिट्स. दे आर वेरी प्रोसेसर वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी. तो हम कह सकते हैं कि बॉट फ्रॉम टॉप टू बॉटम द स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज एंड ऑल्सो देयर access times are also increased from top to bottom, where cost per bit is increasing from bottom to up. So I hope you guys understand this diagram efficiently. So into the next slide. So here we will see how we can calculate the cost of a memory. Suppose there is a memory M1, M2 and M3. Suppose M1 memory is a cache memory, M2 is the main memory, and M3 is a magnet optic tape. So इनका जो साइज है M1 का S1 है, S2 है M2 का, और M3 का साइज है S3. और इन सबकी जो पर बिट स्टोरेज कॉस्ट है वो है C1 C2 C3. सो M1 का कॉस्ट कितना आएगा? C1 इंटू C1 इंटू H1.
हम क्या कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ मेमोरी क्या होता है, साइज इन बिट्स मल्टीप्लाई बाई पर बिट स्टोरेज कैपेसिटी। हमने कॉस्ट बताया कि कॉस्ट होता है S1 इंटू C1 M1 का साइज इन बिट्स मल्टीप्लाई पर बिट स्टोरेज कॉस्ट। सिमिलरली M2 के लिए होता है S2 S3 और M3 का होगा S3 इंटू C। तो हम एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, S1 इंटू C1, जो S1 C1 का थे जो हमारे M1 के कॉस्ट, M1 मेमोरी कॉस्ट, S2 C2 का थे M2 मेमोरी के कॉस्ट, और S3 C3 का थे मेमोरी थर्ड के कॉस्ट। इन सबको हमें, इन सब के कॉस्ट और डिवाइड बाय देयर साइज, दिखाते हैं हम लोग के साइज थे। S1 मेमोरी का साइज, S2 था M2 मेमोरी का साइज, और S3 था M3 मेमोरी का साइज। और साइज किसमें थे, इन बिट्स, मेमोरी इन साइज थे बिट्स। तो हम इन सबको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, सिग्मा ऑफ SI इंटू CI का सिग्मा डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ SI। तो इस तरीके से हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं मेमोरी की। नाउ नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, here we have a memory representation. Memory representation is basically the method of representing memory. How we can represent memory? So here we can memory represented as number of cells into one cell capacity. Let's see. Suppose it is a, what are the जिसका मेमोरी के जे सेल। तो सपोज हमें मेमोरी को एक्सप्लेन रिप्रेजेंट करना है। सो सपोज हमें 4x4 इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। हमें 4x4 बिट्स की मेमोरी, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो पहले सेल में क्या होगा, इस सेल में भी हमारा 4 बिट्स, इसमें भी हमारा 4 बिट्स होगा, इसमें 4 बिट्स होगा, इसमें 4 बिट्स। हम सबके एड्रेस दे देंगे, 0 1 2, इसका एड्रेस 2, इसका एड्रेस 2, इसका एड्रेस 3। तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया 4x4 बिट को। तो क्लियर है, सामने 4, हमने सबको एड्रेस दे दिया, और एक सेल में कितना है, 4 बिट्स। सब प्रकार से हम मेमोरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा हम इसी को कह सकते हैं नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन इनटू पर बिट्स लोकेशन। जैसे हमने पर बिट्स कहा, बिट्स पर लोकेशन, तो हमने हर जगह पे कितने लोकेशन दिए हैं, 4 बिट्स। इस लोकेशन में हमने कितने 4 बिट्स, और कितने हमने मेमोरी एलोकेशन किए हैं, ये देखिए हमने किए हैं टोटल 4 बिट्स। इससे हमें कह सकते हैं 4x4 बिट्स का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह हम कर सकते हैं, अगर हमें इसी तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोर, इसमें हम थोड़ा बढ़ लेते हैं, 8x16 बिट्स। तो इससे में हम कितना स्टोर करेंगे, और फिर वी आर स्टोरिंग 6 बिट्स, और हमें कितने बिट्स लगेंगे, और हमें कितने एड्रेस देने पड़ेंगे हर एक सेल को। हमें टोटल यहाँ से 0 स्टार्ट करें, और जहाँ 7 पे जाके खत्म करें। ऐसे हम पूरे रिप्रेजेंट करेंगे ना। अभी देखिए हम जब हमने एड्रेस बिट
हम बात करते हैं एड्रेस। तो पहले वाला सेल का हमने एड्रेस दिया, इधर पे जो 4 क्रॉस 2 का हमने दिया 0 1 2 3 4 इस सेल का। तो अगर हम इन्हें बाइनरी प्लेस में 0 0 और इधर हम रिप्रेजेंट करें 1 को 0 1 और 2 को 1 0 और 3 को 1 1, इसलिए हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें एड्रेस बिट्स को रिप्रेजेंट तो हमें एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट्स लगे इधर पे? 2 लगे। हमने दिया था इधर पे 16 बिट्स है, तो मैक्सिमम होगा 7। 7 को रिप्रेजेंट करने में हमें कितने बिट्स लगेंगे? 3 बिट्स लगेंगे रिप्रेजेंट करने। सो हम कह सकते हैं कि जो एड्रेस बिट्स है वो क्या है इसका, हम जो इसको है, जो हम नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 की पावर में। तो जितने 2 की पावर हम अपने एड्रेस बिट्स लगेंगे यार, 8 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 की पावर 3। और इधर हमें कितने एड्रेस बिट्स लगे? 3। 3 बिट्स। हाँ, इस टेबल को फिर सपोज तो ये टेबल को फिल कर दिया। नंबर ऑफ सेल 4 है, तो में कितना है एड्रेस साइज के लिए कितने बिट्स लगेंगे? 2 बिट्स। टू द पावर 2 इक्वल टू 4, तो 2 बिट्स लगेंगे। सिमिलरली अगर साइज 8 तो हमें नहीं ठीक पावर 2 इक्वल टू 8। सिमिलरली 16 एड्रेस सेल है तो हमें कितने बिट्स लगेंगे एड्रेस साइज की? 4, टू पावर 4 इक्वल 6। और ये 2 पावर n सेल, तो हमें लग रहा है n सेल। और यदि नंबर ऑफ सेल इक्वल टू x, कोई अननोन नंबर, तो हमें लगे log base 2x. So due to basic maths, I hope you guys are understanding this. So now move to our next slide. Next slide. That is how CPU use memory hierarchy. So let's understand. पहले CPU कैसे यूज करना है। तो CPU सबसे पहले बात करता है, CPU सबसे पहले चेक करता है कैश मेमोरी। So, अगर उसे डाटा कैश में मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो वो नेक्स्ट लेवल में मूव करता है। सबसे कैश पे क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि कैश फास्टर मेमोरी है, एज ए फास्ट मेमोरी है। हम देख रहे लेवल में कैश अपर लेवल में, तो ये फास्ट है। उसके बाद वो अगले लेवल जाते जाते हैं बॉटम में, उसे टेबल में उससे नीचे था। तो दैट इज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का चाहे फिजिकल चाहे प्राइमरी सेट है, तो एक ही बात है। सो और दिस उससे कम्युनिकेट करता है मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी में अगर उसे मिल जाता है तो वो डायरेक्ट सीपीयू तक पास कर सकता है, जब कैश मेमोरी तक भी दे सकता है। दोनों तरीके हैं उसके पास, या तो कैश मेमोरी के थ्रू कम्युनिकेट करे, या तो वो सीधा कम्युनिकेट करे सीपीयू। अगर मेन मेमोरी में भी नहीं मिला तब, यदि अगर डाटा उसे तो यदि अगर डाटा उसे मेन मेमोरी में नहीं मिला तो वो सेकेंडरी मेमोरी पे सेट करेगा। तो फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी he can't directly pass it to CPU. The data must be fetched into main memory. Fetched into main memory. Then main memory computed CPU either through the cache memory or through directly. So this is how the CPU uses memory hierarchy. So वो इधर पहले कैश मेमोरी से चेक करेगा, अगर कैश में नहीं है तो वो मेन मेमोरी में जाएगा, एंड थर्ड हो जाएगा कैश मेमोरी हो जाएगा सेकंड। फिर सीपीयू क्या है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की तरफ सबसे क्यों ज्यादा है? क्यों? क्योंकि ये अपर लेवल की वजह का फास्ट है।
ठीक है। उसके बाद में जाएगा मेन मेमोरी में, जो उससे थोड़ा स्लो है इसकी स्पीड, और उससे भी स्लो है सेकेंडरी मेमोरी। इस दिस इज हाउ द सीपीयू यूज मेमोरी हायरार्की। हम अकेले सेकेंडरी पे डाटा नहीं मिलता है, तो सेकेंडरी पे हमें हमेशा डाटा मिल ही जाता है, इसलिए हमें। तो नाउ मूव टू नेक्स्ट। here here let's understand some important key terms। इनका काफी आगे बहुत ही यूज है। सबसे हमें बात करते हैं इसके बारे में। लेट्स कैश। कैश when the requested data is found in the cache memory। तो सीपीयू को भेजा तो उसे कैश मेमोरी में मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा कैश। और सपोज उसे डाटा नहीं मिला, उसे अगर डाटा नहीं मिला तो जो हो जाए कैश मिस। मैंने सीपीयू डिड नॉट फाइंड द रिक्वायर्ड डाटा। उसके बाद जब डाटा नहीं मिला तो वो मेन मेमोरी तरफ जाएगा। तो ये तो हो गई बात। तो अगर डाटा सीपीयू को कैश मेमोरी सबसे कम्युनिकेट करता है कैश मेमोरी से, कैश मेमोरी में डाटा मिल गया तब कैश हिट हो जाएगा। लेकिन अगर डाटा उसे नहीं मिला तब जो है कैश मिस। आप दोनों से ये समझ गए होंगे व्हाट इज कैश हिट एंड व्हाट इज कैश मिस। देन देयर इज अनदर important term, hit ratio। Hit ratio is the ratio of a cache hit to the number of the total number of memory access। तो मेमोरी ने सपोज 10 बार एक्सेस किया सीपीयू ने, और उसमें से उसे 6 बार मिल गया डाटा, कैश हिट हो गया। सो हिट रेशियो हो जाएगा 6/10। होता है कितनी बार क्योंकि इधर 10 बार टोटल में हमने मेमोरी ने एक्सेस किया था सीपीयू ने। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट इज कैशेस, हिट रेशियो, कैशेस। Getting what is these three are very important topics. This will be used in the further numericals. So let's move to next slide. Let us now we have to discuss what is simultaneous memory access. So first of all, we have to discuss what is simultaneous memory access. So here, simultaneous memory access refer to the ability of a computer system to access multiple memory zones at a time. Here, the CPU at a time can access both cache memory and main memory. So these techniques helps the system performance and reduce the waiting time for the CPU. So in modern days computer system, different memory levels such as cache memory and main memory works together. When the CPU requires the data, the system can send multiple memories simultaneously or in a very fast sequence. So, since it's taking mm, more than two levels at a more than one levels at a time. So this increase the this reduce the access time. In this method, we have a very less exceptions. We are since CPU is accessing both level 1 and level 2, cache and main. Also, there could be a level 3 possible. So, in this method, you can access more than one level at a time. The CPU access more than one level at a time. Now, let's discuss access time. So, what is the average access time for access? Here is the access time is equal to S1 T1 into S1 1 minus S1 into T। So S1 का लेवल 1 का हेट रेस। तो हमने हेट रेस में बात की थी, क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल मेमोरी एक्सेस। ये है लेवल 1 का हेट रेशियो।
और टेबल का है जो हमें टाइम लगता है, टाइम टू एक्सेस लेवल वन, वन माइनस एक्स टू, ये क्या है, वन माइनस वन, ये क्या है, ये केस मिस रेशियो। सो जितनी वजह से है, सपोज केस हिट 6 टाइम हिट हुआ, फिर उसने 10 बार, अगर टोटल 10 बार उसने एक्सेस किया और 6 बार उसे डाटा केस मेमोरी मिल गया, तो केस हिट हो गए 6/10। और जहाँ उसे कितने बार से डाटा नहीं मिस हुआ है, वो होगा 4/10। हम इसे कह सकते हैं 1 माइनस हिट रेशियो इज इक्वल टू केस मिस रेशियो। So, and what is T2? T2 is the time to access level 2. What is here level 2? Main memory. And here level 1 is cache memory. So now move to the next slide. That is hierarchical access memory organization. और जहाँ हम डिस्कस करेंगे, we were discussing, and first we have discussed hierarchical access memory organization. How it is, what is hierarchical access memory organization? Then we will see what its average memory access time. Here the first we discuss what is hierarchy access memory organization. So here the CPU first access level 1 only. If the data is found in the level 1, then it's okay. Otherwise, level 2. Unlike simultaneous where CPU are accessing level 1, level 2, and further on levels at the same time. But here in hierarchy access memory, CPU first interacts with level 1. This is where the data is present in level 1. If it is present in level, then it's good. Otherwise, it will proceed to next level. So, in hierarchical memories range in level such as register cache memory. So they access each level one after another. So और ये हम फास्टर लेवल मेमोरी से स्लोअर मेमोरी तक जाते हैं। जैसे जो लेवल 1 का थे फास्टर, तो जो सबसे फास्ट मेमोरी को सेट करता है, उसके बाद अगर फास्टर का होती है, केस मेमोरी का होती है, फास्ट होती है। अगर डाटा इसमें मिला तो वैसा नहीं तो इसको दिया जाता है मेन मेमोरी पे, एंड so we can say that since simultaneously are accessing all the label at the same time, when hierarchical are accessing one after one, so we can say that in simultaneously there will be the time access will be less, and in hierarchical access memory the time to access the data will be high. You can see here the formula S1 hit ratio of level 1 is outer hit ratio एकदम लेवल 1 समझे जब T1 है, ये टाइम टू एक्सेस है, इसका लेवल 1 है टाइम टू एक्सेस, लेवल 1 तो हमें लग रहा है कितना टाइम टू एक्सेस, टाइम टू एक्सेस लेवल 1, and we have discussed what is 1 minus S1, it is case miss ratio. Yes, miss ratio.
here we have to multiply it by the time taken to the sum of it time taken to access level 1 and then level 2. This is the key thing in the board form. And simultaneously, we have to say what the time required to access level 2. Similarly, here the time required to access, we are adding since it's first time required will be the for the level 1. Then the time after the time will be required after that main पहले हमें जितना टाइम लगेगा केस मेमोरी को केस मेमोरी में नहीं मिलने को जितना उसे टाइम लगा मेन में डाटा काउंट कर दे उन दोनों का समीशन. So I hope you guys what is simultaneous and what is hierarchy memory access and what is their formula and what is the key difference. Hmm. Let's discuss an numerical system. Here the computer system has cache memory and the main memory. Cache memory will be level 1 and main memory will be level 2. Cache access time is 30 nanoseconds and the main memory access time is 150 nanoseconds. If the hit ratio is 0.80%. So then calculate the average access time of a CPU using hierarchical access method and simultaneous access method. So first of all, what is given here? Given S1 S1 equal to the 0.8 or T1 then the time to access cache memory कितना है 30 nanosecond and T2 150 nanosecond. Yes. So basically it's very simple. We have to put the formula. So for the simultaneous there is a S1 into T1 plus 1 minus S1 into T2. So in the simultaneous we have put the formula S1 into T1. We have see the S1 is 0.8 and T1 is 13 years. That 1 minus S1 that is 0.2 into T2. So we have basically put in the formula. We have got the answer is 54 nanoseconds for the simultaneous access memory access. No. And hierarchy access memory again we will put in the formula. The formula is S1 into T1 plus 1 minus S1 into T1 plus T. So here is this S1 into T1 1 minus S1 into T1 plus T2. Here we put in the formula and they have got what 16 nanoseconds as the answer in hierarchical access memory. It is our answer. As you can see that in hierarchical access memory we require a larger time as compared to the simultaneous access memory. So, so I hope you guys understand all these topics. So thank you for the watching. Do if you like this video, like. That's all from today. We will discuss in our next video. We will discuss about cache memory and the method. That's from today.